Hey guys, welcome to my channel. Today we will learn about nutrition and its related topics like what is food, nutrients, types of nutritions, autotrophics and heterotrophics, and types of heterotrophics. So let's start from the food first. So what is food? Food हमारे लिए फ्यूल की तरह है. हम लोग जो भी खाते हैं it gives us energy and helps in the biosynthesis and development of the body of the organism. So what is food? Food is an organic substance which contains nutrients. Simple. Now what is nutrients? Nutrients are the part of food which are the main reason behind the food's energy and their helps in development of the body. So there are various types of nutrients like carbohydrates, vitamins, minerals, proteins, fats and lipids. These all are required for the development of body and energy. Whereas carbohydrates and fats are the main reason which gives us energy, whereas vitamins, minerals and proteins helps in the body development and the biosynthesis of the living organism. Next is types of nutrition. There is two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. In autotrophic nutrition, organisms are dependent on the sun's energy for their food, whereas in heterotrophic, animals are dependent on plants for their food. So ऑटोट्रॉफिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सन का एनर्जी यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वे मेनली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. देयर इज 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस: Saprophytic nutrition, parasitic nutrition and Holozoic nutrition. Saprophytic nutrition में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे दूसरे डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए और साथ में उसको हार्म भी करते हैं. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करता है जिसके कारण उसमें इंजेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन तीनों प्रोसेस होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स जो मेनली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, कार्निवोर्स जो ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं, और ओमनीवोर्स में वो आते हैं जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं. These are some examples. Mushrooms are saprophytic, whereas leeches, lice, ticks, cuscuta, which is also known as amarbel, which feeds on other plants, are parasitic, whereas other animals which depends on other plants or animals for their food is called holozoic.